Hello friends and dear students, welcome to my maths channel. In today's video, we'll talk about the trigonometric ratios. तो अभी हम यहाँ पर एक briefly describe करेंगे about the trigonometric ratios. Trigonometric ratios. Now you are well aware of, I think, the trigonometric ratios. Dear students, you know that there are three main ratios. तो सबसे पहले हम ratios की बात करेंगे. Sine, cosine and tangent. तो यहाँ पर हमारे पास ये तीन रेशियोज हैं एंड द शॉर्टली अगर हम इनको लिखेंगे द शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइन इज साइन, कोसाइन इज कॉस एंड द टेंजेंट इज टैन. सो फर्दर नाउ दीज आर द मेन थ्री रेशियोज हियर. तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम इनके जो रेसिप्रोकल, यू नो दैट हर एक नंबर का एक रेसिप्रोकल होता है, इसी तरह से जो हमारे पास रेशियोज है इनको भी रेसिप्रोकल्स है. तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज रेशियोज. तो जो साइन का जो रेसिप्रोकल हमारे पास है, सो दैट इज कोसिकेंट. कॉस का जो रेसिप्रोकल है दैट इज सीकेंट एंड tan का जो रेसिप्रोकल है वो कोटेंजेंट. So these are the reciprocals of these three main ratios. तो shortly अगर हम इनको लिखेंगे तो इसको हम लिखते हैं cosec, sec and cot. And अगर हम देखेंगे for example, I am taking the example of 2 here. Now 2 has a reciprocal 1/2. So when you are now this reciprocal is also called a multiplicative inverse. So when you are multiplying a number by its reciprocal, the answer is always equal to 1. So in the same manner here, so when you are multiplying the main ratio with the reciprocal, the answer is always equal to 1. For example, I'm writing here the sine theta. Now यहाँ पर मैंने यहाँ पर थीटा लिखा, तो यू नो दैट थीटा इज द एंगल हियर. तो उसके बाद में हम बात करेंगे कि थीटा की. तो साइन थीटा अगर हम इनकी इक्वेशन बनाएंगे रेसिप्रोकल के हिसाब से, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कोसेक थीटा. तो नाउ दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो एंड द रेसिप्रोकल एंड व्हिच कैन बी फर्दर रिटन एज साइन थीटा into cosec theta is equal to 1. तो यहाँ पर 1 के बराबर है. तो सिमिलरली अगर हम बाकी वो रेशियोज में देखेंगे हम cos का हम देखेंगे cos theta into now cos has the reciprocal sec, so sec theta is equal to 1 and the tan theta into cot theta is equal to 1. Now these are also becomes the identity which can be used in to solve various problems. चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो एप्लीकेशंस हैं इन रेशियोज की. तो सबसे पहले बेहतर क्या होगा, तो विल ड्रॉ राइट ट्रायंगल. तो हम देखेंगे भाई जो ये रेशियोज हैं, व्हाई दीज आर कॉल्ड द रेशियोज. सो रेशियो यू नो दैट, तो रेशियो हम कहते हैं कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज. सो दैट मीन्स तो जो इनकी एप्लीकेशंस हैं साइन की या कोसेक की या बाकी की, तो इनकी एप्लीकेशन हम देखेंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे हम. चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर. ओके, नाउ यू जस्ट सी हियर दिस इज अ राइट ट्रायंगल हियर एंड नाउ दिस इज द 90 डिग्री हियर. यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर है and these two are acute angles. यहाँ पर 2 acute angles हैं and you know that now this side, now if I am keeping here, this is a theta here, this is a theta here. Now this becomes the base, इसको हम कहते हैं base.
तो ये बेस बनता है इधर, एंड दिस बिकम्स द परपेंडिकुलर हियर, ये परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज. In other words, this perpendicular is also called the opposite side. And this base is also called the adjacent side. And the hypotenuse remains there. So now I'm choosing this एंगल हियर, तो यही एंगल जो है हमारे पास है. नाउ दिस एंगल डिसाइड्स व्हिच बिकम्स द बेस एंड व्हिच बिकम्स द परपेंडिकुलर. सो हाइपोटेन्यूज रिमेन्स द कांस्टेंट हियर. तो इसी तरह से इफ आई एम चूजिंग दिस एंगल हियर, नाउ दिस बिकम्स द बेस एंड दिस बिकम्स द परपेंडिकुलर. नाउ लेट अस सी द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इनटू दिस ट्रायंगल हियर. तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर इन अ राइट ट्रायंगल. चलिए इसका हम नाम लिखेंगे ट्रायंगल ABC. इन अ राइट ट्रायंगल BAC वी हैव, तो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइन. तो साइन थीटा. तो जस्ट रिमेंबर दैट नाउ दिस साइन इज द रेशियो हियर एंड दिस थीटा इज द एंगल. तो यहां पर ना दे आर एसोसिएटेड टू वन अनदर. तो यहां पर हम देखेंगे इन दिस ट्रायंगल, तो इसका रेशियो किसके बराबर है, किन दो साइड्स के बराबर है. ठीक है, तो जो इसका साइड होता, जो इसका रेशियो होता, सो साइन इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. तो इन अदर वर्ड्स जो अपोजिट साइड्स आप इसको लिख सकते हो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. सिमिलरली अगर आप इसी का देखेंगे, यू नो दैट द साइन हैज द रेसिप्रोकल कोसेक. अगर हम कोसेक देखेंगे हम, तो कोसेक थीटा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, खाली आपको देखना है क्या भाई, अगर साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है तो जो कोसेक होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर. सो इन दिस सेम वे हियर वी आर हैविंग द cos थीटा जो हमारे पास है, cos इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पर जो cos है, या हम लिख सकते हैं इसको एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. एंड व्हेन यू फाउंड द cos थीटा, तो cos हैज अ रेसिप्रोकल, सो दैट इज इक्वल टू sec थीटा होगा सिमिलरली हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय द एडजेसेंट साइड इज the base also. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो base भी आप लिख सकते हो उधर. You can also write down similarly you can find out the cot. चलो cot भी लिखेंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ tan theta. Now tan theta is equal to, now tan you know that tan is the perpendicular divided by base. So that means perpendicular divided by base. So similarly, the cot has this tan has the reciprocal as cot. Cot होगा फिर base divided by perpendicular. Now these are the values of what these ratios as far as this right triangle is concerned here. तो चले हम आगे बढ़ाते हैं. और किसी को लगता है ये जो वीडियो है, ये जो इसके जो रेशियोज है, ये बहुत ही मुश्किल है इसको लर्न करना, तो हमारे पास एक ट्रिक हमारे पास है. जैसे कि यू मस्ट नो अबाउट द सेंटेंस. आई एम राइटिंग हियर वन ऑफ द सेंटेंस हियर. जस्ट सी हियर, सम पीपल हैव curly black hair to present beauty. तो यहाँ पर मेरे ख्याल से यू मस्ट नो अबाउट दिस सेंटेंस. सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर और ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट द ब्यूटी.
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम, तो लेट अस डिवाइड दिस इनटू द कॉलम्स एंड रोज हियर। ये देखेंगे हम, आपको देखना, देखिए यहाँ पर एस है, यहाँ सम कर्ली टू है। आपको ये क्या रखना है, जो सम है, सम स्टैंड्स फॉर दिस, इसको आपको लिखना है साइन, जो कर्ली इसको आपको लिखना है कॉस, एंड जो टू है इसको आपको लिखना है tan। चलो आई एम यूजिंग द डिफरेंट पेन, तो डिफरेंट पेन का मैं इस्तेमाल यहाँ पर करूंगा ताकि सो दैट यू विल कम टू नो अबाउट नाउ दिस सम। आपको लिखना है ये साइन, दूसरा पेन इस्तेमाल करेंगे इधर, चलिए रेड का इस्तेमाल करेंगे इधर। तो दिस इज साइन, नाउ दिस इज कॉस एंड दिस इज tan। नाउ पीपल, you just hear people stands for P, and they have H, B is capital B, H is there, P is there, and B is there. Now just see here, now this sign, now sign becomes the perpendicular of a hypotenuse. So in this manner you can also learn about this table. This, if you अगर आपको difficult लगता, if you feel difficult to learn what we have discussed so far here, तो यहाँ पर एक short trick में आपको ये सीधा चलेगा पता, आपको simply क्या लिखना है, some people have curly black hair to present their beauty। तो यहाँ पर some stands for sign, this is curly, cos and to tan। तो यहाँ पर people, यहाँ पर P है, यहाँ पर H है, as so you can see on the board here. Now this sign becomes what here? Perpendicular divided by hypotenuse. And cos becomes the base divided by hypotenuse, and tan represents what? The perpendicular divided by base. So this is all about the trigonometric ratios and the values as far as the right triangle is concerned. I hope that you understand this short video.